Again, we are going to resume our lecture regarding the renal physiology, and today's discussion is about the structure of Bowman's capsule. ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो Bowman's capsule है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, what are the things those are going to make the structure of Bowman's capsule, and what is the function of Bowman's capsule in nephron or kidney, you can say. ठीक है, okay. Let me draw. You people have to draw with me, right? Okay. Definitely, you people know that this is the Bowman's capsule, structure of Bowman's capsule, and you people know very well that this Bowman's capsule is uh, fed by afferent arterioles. Is fed by afferent arterioles, and the vessels or the arterioles those are going to leave the Bowman's capsule are efferent arterioles. You people know it already. I have told you people in the lecture of blood supply to kidney, especially when we were discussing the blood supply to kidney. Okay, so these are the afferent arterioles, and the living arterioles are efferent arterioles. So these are afferent arterioles, right? And these are efferent arterioles, right? Efferent arterioles and afferent arterioles. Okay. So definitely, when afferent arterioles are going to enter into the Bowman's capsule, and this bunch of arterioles, when enters into the Bowman's capsule, going to form glomerulus. Now I'm going to draw the structure of glomerulus. Glomerulus. Okay. Definitely, you will know these are the capillaries inside the Bowman's capsule, and these capillaries are known as glomerulus. ठीक है, okay. Or you can say glomerular capillaries. These are glomerular capillaries. Glomerular capillaries. You people can see the small gaps in these capillaries. Okay. Later on, I am going to give name to these little gaps, or you can say holes. Later on. Okay. And these are glomerular capillaries. इनका नाम क्या है? Glomerular glomerular capillaries, right? Okay. Okay. Listen. After this, these capillaries, there is a membrane. There is a membrane around uh, these capillaries. I am going to draw this membrane with another color, right? ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इन कैपिलरीज के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। I am going to make this membrane a bit darker. Then we can differentiate this membrane from rest of the structures of
uh, glomerulus, or you can say Bowman's capsule. Okay, this is the membrane just after the glomerular capillaries, right? And after this this membrane, there is definite name of this membrane. I am going to give the name later on. Next, after this membrane, there are some other structures present here. I am going to draw those structures with an other color, right? Listen, these are another type of cells. Those are present just after the membrane, and these are special type of cells here. Special type of cells here. I am definitely going to give name to these cells, right? ओके, तो ये एक अदर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं यहाँ पे बिटवीन ग्लोमेरुलस एंड बोमैन्स कैप्सूल, राइट? ओके, एंड द पोर्शन आफ्टर the portion after Bowman's capsule is proximal convoluted tubule. You people already know it. Proximal convoluted tubules, right? Or then you can say PCT. Okay. Listen and remember. ये जो अभी मैंने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाई है, क्या बनाई है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के अंदर देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। इन कैपिलरीज के अंदर कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स भी होते हैं, ठीक है? फिर मैं इन कैपिलरी को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूँ, ठीक है? ये कैपिलरी है, ठीक है? इन कैपिलरीज के अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं मौजूद। दो सेल्स आई एम गोइंग टू मेक लाइक दिस, these green color cells. Okay, these are also cells in between the glomerular capillaries. In between the glomerular capillaries. Okay, now I'm going to give the name to the different structure that I have just drawn in front of you guys. This brown color structure that I have just drawn is glomerular basement membrane. ये जो मैंने आप लोगों को बना के दिखाई है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बाद ब्राउन कलर की, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर बेसमेंट बेसमेंट membrane, and you people can also call it GBM, GBM, glomerular basement membrane, ठीक है? ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के फौरन बाद होती है, ठीक है? ओके, and after this glomerular basement membrane, I have drawn some special type of cells, and these special type of cells are called as these orange color structures. These orange color structures are known as podocytes. Are known as podocytes. Podocytes, and these are also called as food processes. Food processes, right? क्योंकि ये food की तरह like food, so that's why these are food processes. Okay, now come towards another type of cells here. Okay, you will see, can see these are afferent arterioles. Those are feeder vessels. Those are feeder vessels. ये feeder vessels के गिर्द, listen, in feeder vessels के गिर्द, there are special type of cells here. These blue color cells, right?
So these blue color type of cells, those are just surrounding the efferent arterioles, are known as juxtaglomerular cells. क्या कहते हैं? Juxtaglomerular cells. Juxtaglomerular cells. Okay. And these juxtaglomerular cells are innervated by neurons. आप लोगों को पता है ना, किडनी की तरफ नेफ्रॉन्स भी आ रहे होते हैं जो कि किडनी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। आप लोगों को पता ही है, यूरिन फॉर्मेशन, रेनिन रिलीज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मैंने आप लोगों को बताया था एक प्रीवियस लेक्चर में। तो ये इनर्वेटेड होते हैं किससे? नर्व फाइबर्स से। नर्व फाइबर्स इनको इनर्वेट कर रहे होते हैं, मीन्स न्यूरॉन्स। ये नर्व फाइबर्स इनको इनर्वेट करके इनके अंदर से मौजूद जो चीज़ें रिलीज होती हैं इनको कंट्रोल करते हैं, नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स। Okay, so these cells are called as juxtaglomerular cells, and these juxtaglomerular cells are also called as JG cells. JG cells. JG cells, right? Or you can say juxtaglomerular cells. And these juxtaglomerular cells are responsible for release of renin. If you people remember, I told you people in the lecture where I was discussing the functions of the kidney. Remember? Renin, renin, right? Which is going to perform certain activities in your body, right? Okay. Next, and other type of cells here. Another type of cells here, right? These special type of cells are known as macula densa cells. इनको क्या कहते हैं? Macula, macula densa cells, right? And these are present in distal convoluted tubules in DCT. अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सर, you are talking about the Bowman's capsule, glomerulus. Why you have drawn these cells? Those are not the part of glomerulus. Why? सुनो, ये जो ग्लोमेरुलस की ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स हैं, जब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जब नेफ्रॉन आप लोग कह लो कैन्गुलेटेड फॉर्म में होता है, या आप लोग कह लो कि बंच फॉर्म में होता है, तो इसका जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है ना, वो डिस्टल कन्वुलेटेड के करीब करीब होता है। अगर आप लोग कभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर निकाल के देखो ना, तो जो असल एक्चुअल प्लेसमेंट होती है किसकी, नेफ्रॉन की, तो उसमें जो उसका ग्लोमेरुलस होता है या जो इफरेंट एफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स होती हैं, वो बिल्कुल डिस्टल कन्वुलेटेड जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है उसके करीब करीब करके होती है। ठीक है, तो इसलिए ये सेल्स, मैकुला डेंसा सेल्स, कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ? ये जुक्सोग्लोमेरुलर सेल के साथ, इसलिए ये आपस में करीब करीब होती हैं, इसलिए सो दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन दीज सेल्स राइट हियर। ठीक है, अभी मैं फंक्शन भी आपको बताता हूँ, बिकॉज वी आर हियर कंसर्न विद द फिजियोलॉजी। सो बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स वी शुड नो अ बिट स्ट्रक्चर ऑफ दिस बोमैन्स कैप्सूल। ओके, तो ये हो गया हमारे पास मैक्यूलर डेंस। ओके, लिसन एंड रिमेंबर, जे cells, you can also call these cells MD cells, MD cells or macular dense cells, right? So another point, juxtaglomerular cells, or you can say JG cells plus MD cells plus MD cells are collectively known as juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus, right? इस टोटल को मिला के दोनों को, because these cells quite oftenly going to communicate with each other to perform the normal physiological activity of the glomerulus. So that's why these cells are sometimes collectively speak out. ठीक है, ये इकट्ठे इनको बोला जाता है juxtaglomerular cells, macular dense cells, abstract. Okay, now come toward the another point. These cells, those I have just drawn inside the glomerular capillaries, and these cells are known as mesangial cells. इन सेल्स का नाम क्या? mesangial cells. Mesangial, mesangial cells, right? Okay. Okay, now come towards another point. You people can see the gaps. Listen and remember, it's a very important point. You people can see here the gaps
द गैप्स बिटवीन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के दरमियान मैंने जो गैप्स बनाए हैं ये वाले, जिसको अभी मैं पॉइंट आउट करने लगा हूँ, ये देखो गैप्स, दीज गैप्स आर नोन एज फिनेस्ट्रेशंस, इनको क्या कहते हैं? फिनेस्ट्रेशंस, फिनेस्ट्रेशंस, डेफिनेटली दीज आर द गैप्स। ये ऐसा क्या लोग ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर पोरस एरियाज है, क्या है? पोरस एरियाज। और इनका जो डायमीटर होता है, इनका जो डायमीटर है, दैट इज 7 to 90 नैनोमीटर। ओके, ओके एंड लिसन। So after these fenestration, those are present between the glomerular capillaries. There is the start of uh, glomerular basement membrane that I have told you people already. So after that, these special type of cells are known as podocytes. ये जो ब्लड वेसल के दरमियान जो आप लोगों को चीजें नजर आई जहाँ से फिल्ट्रेशन होती है, ये बेसिकली चीजें क्या है? फिल्ट्रेशन के लिए ये फिनेस्ट्रेशन हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ से आपको पता है लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट, like sodium bicarbonates, glucose, electrolytes, water, amino acid, vitamins, urea, uric acid, creatinine, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये चीजें यहाँ से फिल्टर होती है बेसिकली, ठीक, ओके। तो इन इन पोर्स को हम कहते हैं फिनेस्ट्रेशंस, ओके। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने पोडोसाइट्स ड्रॉ किए हैं, इन पोडोसाइट्स के दरमियान भी आप लोगों को गैप्स नजर आ रहे हैं, ठीक है? द वन गैप दैट आई एम गोइंग टू मेंशन हियर, दैट आई एम गोइंग टू मेंशन हियर इज, ये देखो, दो पोडोसाइट्स के दरमियान गैप, the gap between two podocytes is known as filtration slit, is known as filtration filtration slit, filtration slit, and the diameter for this filtration slit is 25 nanometer, 25 nanometer, right? Okay, okay, another point, ये जो मैंने आप लोगों को बताया ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसका जो, इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सैलो प्रोटीन्स, SIALO, shallow proteins, and these shallow proteins carry negative charge, ठीक है? ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, दिस इज ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड दिस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन carries negative charge. It means that the things those are going to be filtered through this glomerulus and becomes the part of filtrate are selective in nature. ये सब चीजों को यहाँ से नहीं गुजरने देती, कौन? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट? ओके, अभी हमने पढ़ लिया जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? रेनिन, एंड रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इन द बॉडी, ठीक है? ओके, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा मैक्यूलर डेंसा सेल्स, राइट? मैक्यूलर डेंसा सेल्स जो हैं, दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्ट सेंसिंग, ठीक है? अब ये कैसे सॉल्ट को सेंस करके क्या करते हैं, वी विल सी डाउन द रोड इन द अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है? अभी अभी एक फंक्शन सुने कि एक होता क्या है, रेनिन जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज होता है, मैक्यूलर डेंसा सेल्स आर गोइंग टू रिलीज, सॉरी, आर गोइंग टू डिटेक्ट सॉल्ट, मतलब सोडियम क्लोराइड कितना आ रहा है, उस हिसाब से ये जो फिल्ट्रेट होता है उसकी अमाउंट को कम या ज्यादा करते हैं, एंड दैट अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ों को सेंस करके तो इफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल्स को डायलेट या कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं, क्योंकि आप लोग पता है यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो अगर सोडियम ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, सोडियम को कम करना है, ज्यादा करना है, ये सेंस करेंगे, ये सिग्नल भेजेंगे यहाँ पे जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल फिर क्या करेंगे? रेनल रिलीज करेंगे, रेनल फिर ब्लड प्रेशर को ज्यादा काम करेंगे, अमाउंट कम ही ज्यादा हो जाएगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे स्मूथ मसल भी होते हैं, हियर आर द स्मूथ मसल ऑफ द ब्लड वेसल्स, आपको पता है ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स, लिसन एंड रिमेंबर फॉर एवर, स्मूथ मसल, और यू कैन से द मसल्स ऑफ ब्लड वेसल आर स्मूथ मसल, तो ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाएंगे, ठीक है? ओके, इफ वी से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ओके, अभी हम एक टाइप ऑफ सेल्स को छोड़ गए हैं, दैट आर मेसेंजियल सेल्स। ये जो मेसेंजियल सेल्स हैं, दो आर इन बिटवीन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर,
देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है, इधर से ये देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है। तो ये जो ब्लड होता है ना, ये डेफिनेटली इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के ऊपर प्रेशर लगाता है। जब प्रेशर लगाते हैं तो ये सेल्स भी क्या करते हैं, उस प्रेशर को सेंस करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी रिलैक्स हो जाते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, और ये भी ग्लोमेरुलस की तरफ आने वाले ब्लड का जो फ्लो होता है उसको रेगुलेट करते हैं। सो दैट्स दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल टाइल इन नेचर। ठीक है। एंड these cells perform both type of roles: physiological role, physiological role, right, and pathological role, pathological रोल एज वेल। कि डिफरेंट डिजीजेस के अंदर इन सेल की जो ना वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ये सेल साइज में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो किडनी डैमेज हो जाती है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है। अच्छा, इफ वी सी द फंक्शन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, देयर आर टू फंक्शन ऑफ दिस पोर्शन: filtration of waste, as you people already know, the function of kidney is responsible for the uh, filtration of waste, waste को यहाँ से फिल्टर करके यूरिन का पार्ट बना देते हैं। filtration and regulation, regulation of filtration, ये दो ये काम करते हैं। और वो जो रेगुलेशन ऑफ फिल्ट्रेशन है उसका एक पूरा नाम है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो कितनी फिल्ट्रेशन होगी, कब ज्यादा होगी, कब कम होगी, तो इनको भी रेगुलेट करते हैं। बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स हियर, लाइक मैक्यूलर डेंसा सेल्स, मेसेंजियल सेल्स, juxtaglomerular cells, राइट। तो ये डिफरेंट यहाँ पे रोल्स हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ glomerulus and Bowman's capsule collectively. And you people know that Bowman's capsule plus glomerulus are collectively known as renal corpuscles, or collectively known as renal corpuscle. So this is all about the today's discussion. ठीक है। फिर हम आगे जाके भी कुछ चीज़ों को डाउन द रोड देखेंगे। अभी मैंने आप लोगों को ब्रीफ किया कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट इज द साइकी बिहाइंड हियर।